Hey everyone, welcome to South Delhi Flows, and Team South Delhi Flows is today in Panchsheel Park South to showcase an amazing property. Normally जो 500 गज की प्रॉपर्टीज होती हैं साउथ दिल्ली में या तो नैरो रोड पे होती हैं या मेन रोड पे होती हैं, बट दिस इज अ सुपर पीसफुल वाइडर रोड and we have this amazing 500 square yard first floor available in this. It has 4 bedrooms, separate parking for 3 cars. So let's start the video tour. So साउथ दिल्ली के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड्स की जो रेडी टू मूव ऑप्शंस होती है वो काफी कम होती है. So right now we have this amazing first floor. So let's start the video tour of this property. Now if you look at this super solid wooden main door, काफी solid door है. Samsung का biometric lock system इसके अंदर दिया हुआ है. And if you look at this amazing foyer design, ग्रे कलर का Italian stone इसके अंदर यूज हुआ है जिससे काफी openness इस अपार्टमेंट के अंदर आती है. And the drawing room has been separated by this glass partition. So let's see the drawing room area. Now let's see the drawing room area. A very elegant, good size, good planning का example है. Just look at the size of this drawing room. Such a rectangular, wider, good size drawing room area. और जो स्टोन सिलेक्शन इसके अंदर यूज हुई है वो सतवारियो स्टोन यूज हुआ है, विच इज़ अ सुपर प्रीमियम स्टोन. थ्रू आउट डक्टेबल VRV एयर कंडीशनिंग इसके अंदर ड्राइंग रूम के अंदर यूज हुई है. एंड टू सेग्रीगेट द ड्राइंग रूम फ्रॉम द फॉयर एरिया, अ वेरी एलिगेंट ब्यूटिफुल ग्लास डोर विद ग्लास पार्टीशन इसके अंदर यूज हुआ है. और जितनी भी फिटिंग्स हैं इसके अंदर, इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन डोर, these are all good quality aluminum door fittings, branded fittings हैं. डबल ग्लेज साउंड रेजिस्टेंट ग्लासेस हैं. एक वायर मैश भी प्रोवाइड किया गया है. सो वेरी थॉटफुल कंस्ट्रक्शन. This is the balcony that is attached with the first floor. एक फुल लेंथ की स्पेशियस वाइडर बालकनी है, कवर्ड बालकनी है. आप किसी भी वेदर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लुक एट एवरीवेयर, पंचशील इज़ नोन फॉर इट्स ग्रीनरी. सो इट्स अ वेरी सुपर प्रीमियम वाइडर रोड लोकेशन ऑफ पंचशील पार्क. So let's see the first bedroom. Guys, just look at the size of this bedroom. काफ़ी well thought, good size bedroom. Wooden flooring और use हुई है. काफ़ी elegant color है wooden flooring का. In fact, to complement the interiors, fall ceiling के अंदर भी wooden use हुआ है. And it has this ductable VRV air conditioning which adds the premiumness to this apartment. जितनी भी fittings हैं, double glaze sound resistant glasses हैं, one of the best fittings हैं. Now look at the closet area. This bedroom has a 4-door closet area. Just look at the design जो इस closet के अंदर यूज हुआ है. Circular fluted lines के अंदर fluted pattern में ये closet बना हुआ है. And this is how the closet looks from inside. Very spacious closet to store your house essentials. और इस बेडरूम के साथ में एक काफ़ी elongated balcony भी इसके अंदर यूज हुई है. See the bathroom that is attached with this bedroom. Just see the amazing size of this bathroom. It's a very good walkable bathroom. काफ़ी elegant जो stone selection है. Dark color का Italian stone cladding है walls के ऊपर. काउंटर टॉप में एक white color का और creamish color का Italian stone use हुआ है. One of the best branded fittings by Cure and Kohler. And now if you look at this shower cubicle area, normally आपको इतना spacious shower cubicle नहीं मिलता, but being a 500 square yard and such a good planning, it's a very good walkable shower cubicle with best of the fittings and rain shower. This is the area for WC. So we have already seen a 4-door closet in the bedroom, but
उस 4 डोर क्लोजेट के अलावा भी एक 6 डोर का क्लोजेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और वॉक इन क्लोजेट, ग्लास और मेटल की फिटिंग्स हैं इसके अंदर. दिस इज हाउ द क्लोजेट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. सो एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस यू विल बी गेटिंग along with this apartment. So let's see the second bedrooms of this 4 bedrooms property. Guys, good size bedroom, quite well ventilated because there's a balcony attached to it. जो stone selection है that is greyish in tone. Same stone के साथ complement करने के लिए जो interiors भी यूज हुए हैं, जैसे कि ये wardrobe के shutters हैं, ये matte tone के अंदर grey color के shutters यूज हुए हैं. These are handleless shutters, and this is how the closet looks from inside. Very spacious, a lot of space can be put into these closets. There's a built-in LED also, and जो balcony भी इसके साथ यूज हुई है वो काफ़ी spacious. एक property के side के अंदर ये balcony आती है, so it's a good ventilated balcony, a walkable balcony over here. Now let's see the bathroom that is attached with this bedroom. So this is the bathroom that is attached with this bedroom. काफ़ी एलिगेंट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग इंटीरियर्स है. लाइट टोन के अंदर इटालियन स्टोन क्लैडिंग, बट देयर इज अ डिफरेंट स्टोन यूज्ड ऑन द काउंटर टॉप. सिमिलर क्यूओ एंड कूलर की सारी फिटिंग्स इसके अंदर यूज हुई हैं. अ वेरी डिजाइनर वैनिटी विद 2 ड्रॉर्स एंड लॉट ऑफ स्पेस टू स्टोर योर बाथरूम एसेंशियल्स. देयर इज अ विंडो ऑल्सो फॉर एडेड नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन. एंड दिस इज द वॉकेबल शॉवर क्यूबिकल. शॉवर क्यूबिकल के अंदर ग्लोहे की प्रीमियम फिटिंग्स यूज हुई है विद रेन शॉवर, एंड द WC एरिया हैज बीन ऑलरेडी सेग्रीगेटेड, सो अ गुड प्लानिंग. सो जब हम साउथ दिल्ली के अंदर घर दिखाते हैं तो हम ड्राइंग रूम दिखाते हैं, किचन दिखाते हैं, बेडरूम दिखाते हैं, बट बहुत कम ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका पाउडर बाथरूम इतना सुंदर होता है. Now look at this amazing, very modernly built powder bathroom. Onyx का stone इसके अंदर यूज हुआ है. अगर आपको onyx के बारे में नहीं पता, onyx is a translucent stone जिसके अंदर से लाइट पास कर सकती है. टर्की से इस स्टोन का ओरिजिन होता है. It's a very expensive, super premium stone. उस स्टोन को यूज करके एक वैनिटी टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है, बिल्ट इन सिंक है, and a very good use of inbuilt lighting in this bathroom. Good size round mirror with a built-in LED light, and this is the space for WC. So indeed one of the best powder bathroom we have ever covered in South Delhi. सो आइए इस घर की किचन देखते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन किचन्स इन साउथ दिल्ली. अगर आप इस किचन की ओरिएंटेशन देखेंगे, इट्स स्क्वायरिश किचन. लंबी नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, इट्स स्क्वायरिश किचन. सो स्क्वायरिश किचन का जो एडवांटेज है, आपको सेंटर में एक काफ़ी वॉकेबल स्पेस मिल जाता है. देयर इज़ गुड साइज स्लाइडेबल विंडो ओवर हेयर to add to the natural light and ventilation. हमारी इंडियन कुकिंग में इस तरह की विंडो अगर किचन में मिल जाए, that is really useful. Now, super premium Bosch की fittings है. There is an inbuilt microwave and oven by the Bosch, and also there is a inbuilt chimney and hob by the Bosch. ग्लास का काफ़ी अच्छा इसके लिए यूज़ हुआ है. These are the soft touch Blum के shutters इसके अंदर यूज़ हुए हैं to store your kitchen essentials. जितनी भी फिटिंग्स यूज हुई हैं, these are soft landing fittings by Hetek. Now let's see the best part of this kitchen. It has this separate utility area. So इस utility area का ये एडवांटेज होता है कि आपकी जो डर्टी किचन है वो यहाँ पे आए थे. अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, so you know they won't be able to see the dirty utensils. Now ample of space has been created to store your
kitchen essentials over here. Uh, Being a luxury 500 square yards property, it also has this Hitachi air conditioner provided in the kitchen, and this is the space for a good size refrigerator. So just adjacent to the powder bathroom, to the comfort of the guest जो भी आपके घर में आए, यहाँ पे एक separate डाइनिंग स्पेस भी है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया अलग से नहीं मिल पाता. नॉर्मली ड्राइंग रूम के साथ क्लब होता है, बट दिस हैज़ अ सेपरेट डाइनिंग एरिया ऑल्सो. It can be used as a dining area. It can be also used as a family lounge. If you want to make a TV room over here, if you don't want to see TV in the drawing room, you can easily create a good size TV lounge over here. Now, a very loaded apartment, very elegantly done interiors. ब्यूटीफुल वुडन लुक के अंदर एक ये फीचर वॉल यहाँ पे क्रिएट की हुई है. सीलिंग के अंदर भी वुडन यूज हुआ है. सच ब्यूटीफुल लाइट फिक्चर्स ओवर हियर. हिटाची की कैसेट एसी यहाँ पे लगा हुआ है. तो गुड प्लानिंग. सो वी हैव ऑलरेडी सीन 2 bedrooms, बट जो बाकी के 2 bedroom, इट्स अ 4 bedroom प्रॉपर्टी. 1 bedroom is over here, 1 is over here, but right before the bedroom, सच ब्यूटीफुल वुडन यूज. जितना भी वुड घर के अंदर यूज होता है उससे एक इंटीरियर्स को एक बूस्ट मिलता है, एक वार्मनेस मिलती है. सो सच अमेजिंग वुडन निश एरिया हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग द लाइट्स एंड द वुडन एलिमेंट्स. सो जिससे कि आपको अपार्टमेंट लेने के बाद इंटीरियर्स का कोई बहुत सारा काम नहीं कराना पड़ता. Now it's time to see the third bedroom. कम ही घर होते हैं साउथ दिल्ली के अंदर जिसके अंदर आपको क्लोजेट स्पेस एम्पल मिलता है. Now, being a 500 square yard, very good planning. If you look over here, it has this full wall-to-wall closet. एक 8 door का closet इसके अंदर यूज हुआ है. और not just closet, अगर आप इसकी फिनिश देखें, मैट फिनिश के अंदर बेज, ग्रेइश बेज के अंदर इसके अंदर शटर्स यूज हुए हैं. That is adding to the interiors of this apartment. This is how the closet looks from inside. Inbuilt LED light का use हुआ है. There are 3 good sized drawers. All these drawers are with soft landing. Now, Hitachi की air conditioning है. Hitachi का ही cassette AC है. It has this rear balcony also, which is a good full length balcony. Ample of space has been given in this balcony also for ventilation also. Now let's see the bathroom attached to it. So this is the luxury bathroom attached with the third bedroom. Good walkable bathrooms हैं. जितने भी bathroom हैं इस property के अंदर वो काफ़ी spacious walkable bathroom हैं. Very beautiful stone selection, beige greyish tone के अंदर stone use हुआ है. Cooler and cooler की सारी fittings हैं. Rectangular looking glass mirror with fluted lines के अंदर LED use हुई है. Now this is a good part. It also has this openable window, so that अगर आप विंटर्स में इस विंडो को ओपन करते हैं तो जो मॉइस्चर बाथरूम के अंदर होता है, स्टीम वगैरह होती है, वो ट्रैवल कर जाती है बाहर, जिससे कि बाथरूम की जो फिटिंग्स होती हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है. गुड साइज वैनिटी. देयर आर 2 big drawers over here. Ample space to store your bathroom essentials. A very spacious shower cubicle. ग्रोहे की सारी फिटिंग्स हैं. रेन शॉवर भी ग्रोहे का है. Good separate shower cubicle and a segregation to this WC area. Now let's see the fourth bedroom. कम ही बेडरूम होते हैं साउथ दिल्ली के किसी प्रॉपर्टी के अंदर जो इतने स्पेशियस और एलिगेंटली डिज़ाइन होते हैं. अगर आप इस बेडरूम की ओरिएंटेशन देखें, साइज़ देखें, काफ़ी अच्छा साइज़ है. एक स्क्वेरिश ओरिएंटेशन है. स्क्वेरिश ओरिएंटेशन के कारण एक वॉकेबल एरिया काफ़ी बन जाता है. जो बेड है दैट विल फेस दिस वे. वास्तु को डिज़ाइन को थॉटफुली सोचते हुए बाथरूम्स को और बेडरूम को डिज़ाइन किया हुआ है इस प्रॉपर्टी में. Now look at this is the closet area. It has this 4 door closet over here. काफ़ी elegant cream tone के अंदर
फ्लूडेड लाइंस के साथ एक यहाँ पे जो वार्डरोब एरिया है वो डिज़ाइन किया हुआ है. This is how the closet looks from inside. 3 good size drawers over here, built-in LED. काफ़ी अच्छी फिनिश है वार्डरोब के अंदर भी. Now it has this balcony access also. इस बेडरूम के साथ ये बालकनी दी हुई है जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ इसी बेडरूम के लिए. प्रॉपर्टी के साइड में है ये बालकनी. इस बालकनी के कारण काफ़ी नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन का फ्लो रहेगा इस बेडरूम के अंदर. सो अमेजिंग प्लानिंग. Now let's look at the bathroom that is attached with the 4th bedroom. Guys, amazing, मतलब क्या कमाल के बाथरूम्स हैं इस प्रॉपर्टी के. काफ़ी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लुक इसके अंदर दी हुई है. जो इंटेंशनली जो स्टोन क्लैडिंग वॉल क्लैडिंग में यूज़ हुआ है, एक डार्क कलर का स्टोन है जिससे कि एक मॉडर्न फील इस बाथरूम के अंदर आ रही है. इट हैज़ अ कंट्रास्टिंग स्टोन ऑन दिस काउंटर टॉप. एक लाइटर टोन के अंदर स्टोन हुआ है. क्यू की ब्यूटीफुल फिटिंग्स हैं यहाँ पे. The WC area has been already segregated from here. पूरा width का WC use हुआ है. Now it has this niche area over here also where you can store your bathroom essentials. Inbuilt light आपको light नजर नहीं आएगी but एक ambient light यहाँ पे दी हुई है. Now this is the shower cubicle. Again a very spacious shower cubicle with a practical one. This is an openable window also. If you're taking a steam shower, after that you can open this window so that the moisture will travel outside. And good size shower cubicle. Grohe की सारी fittings हैं, rain shower and these amazing fittings by Grohe. I hope you've enjoyed this property video tour by South Delhi Flows. I am Mohit Minocha, your own luxury realtor in South Delhi. And if you want to buy this property, or if you want to know the price or site visit related queries, you can just call this number 9999004511. And thank you so much for liking, sharing and subscribing to South Delhi Flows on YouTube, and follow us on Instagram, because on Instagram we post these amazing properties on a regular hourly basis. Thank you. Signing off till next time.